मंच पर मेरे साथ विराजमान उत्तराखंड के ऑनरेबल गवर्नर और हमारे एक इंस्पिरेशन, एक अत्यंत प्रेरक व्यक्तित्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, श्रीमती सुनीता टमटा जी, वेलॉक्स मीडिया के फाउंडर श्री मोहित शर्मा जी, और इसके अतिरिक्त देश के अनेक राज्यों से, और ये इट्स इंडीड वेरी हार्टनिंग टू नो कि मणिपुर, जम्मू कश्मीर, मेघालय, हिमाचल, JNK आदि प्रदेशों से, हिमालयन राज्यों से आए हुए सभी प्रतिभागी, उत्तराखंड सरकार के अधिकारीगण, सेतु आयोग में मेरे सहयोगी जिन्होंने इस समिट को मूर्त बनाने में बहुत अपना श्रम और अपना मन इसमें लगा के इसको आयोजित किया. It's indeed my pleasure to address this summit. And of course, before I go forward, I will also tell you a little about my conversation with Honorable Governor recently when we are speaking about the Healthcare Innovation Summit. I must say he is a person who does not go on what you say often. He tries to understand beneath it also. And that's a great quality, because it is not just often what we say, what we articulate, but very important that what is our driver, what is our thinking, what we truly are. And this quality indeed makes him a very inspirational personality. When we use the word Himalayan Healthcare Innovation Summit, I think all of these three words have a distinct meaning and very carefully chosen. Himalayan because our terrain has different challenges altogether. क्योंकि मैं तो उत्तराखंड में ही मेरा जन्म हुआ है, मुझे याद है बचपन में हमारे पहाड़ों में बीमारियां बहुत कम होती थी. स्वस्थ, क्योंकि हवा, पानी और एक तरीके से बहुत बाहरी जो दुनिया थी उस तरह का कम्युनिकेशन कम था, and so and so forth. So we are not used to, of course, to having a lot of these external many elements which come because of the increased focus on material development. So therefore, that is one part. So we are not used to taking a lot of medicines and so forth. So एक बड़ा एक cultural aspect है. And of course the challenges of terrain are there. The challenges of, because you will never have enough healthcare workers in such a spread out geography. So Himalayan is one important aspect which is makes the solutions very unique. अभी परसों हमारी वेस्ट मैनेजमेंट की एक समिट थी, जो वेस्ट का हम स्ट्रेटजी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है उत्तराखंड के लिए, उसके लिए बड़े एक्सपर्ट आए थे. एंड आई वाज इंडीड सो हार्टनिंग टू नो अबाउट and so useful to know about experiences of people from Arunachal Pradesh at that day and Sikkim, कि वहाँ किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट को लोकल कम्युनिटीज़ में वो लोग एड्रेस कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस हैं, हाउ सिमिलर. एंड आई एम सर्टेन दैट दीज थिंग्स आर इन द हेल्थ केयर सेक्टर ऑल्सो. सेकेंड इज़ हेल्थ केयर. इट इज़ सो फंडामेंटल टू लाइफ एज वी ऑल नो. और अभी कुछ समय पहले जब मैं गवर्नर साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि ये हेल्थ जो शब्द है, इसमें मैं आपको कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, कि इसमें हील वर्ड है. इट मीन्स दैट वी आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू हील समवन. सो इट इज़ लाइक अ लिटिल एक्सटर्नल टू एन एक्सटर्नल एलिमेंट. समथिंग कोई ख़राब हो गई है उसको ठीक करना है, और उसको जो है, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अप्रोच. वाइल जो हमारा जो हिंदी शब्द है स्वास्थ्य, उसमें स्व है. दैट मीन्स इट्स वी हु आर वेरी इंपॉर्टेंट. You know, we have to actually start from ourselves. So this applause is more for him, should be, because, and I actually, there's a shloka in Ayurveda which says, swasthasya swasthya rakshanam aturasya vikar prashamanam cha.
दैट मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोगों को दूर करना ही चिकित्सा का उद्देश्य है। तो बड़ा क्लियर हमारे जो प्रणेता है हमारी सभ्यता के, वो इस बात को कह कर गए हैं कि मात्र रोगों को दूर करना ही चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है, वो भी उसका एक उद्देश्य है। So healthcare is so fundamental, and I must tell you also one thing, my personal anecdote. When almost 35-40 years back, when I left my home in the Himalayas, I would say that, and went into the outside world after my graduation from IT, my father only told me two things. One is he told me that I should recite the Aditya Hridaya Stotram, which was told by Rishi Vashisht to Bhagwan Ram. जब भगवान राम जंगल में गए थे तो आदित्य स्तोत्रम उन्होंने कहा था कि आप अवश्य पढ़ें। और दूसरा उन्होंने कहा, बेटा दुनिया में कहीं भी जाओ, दो चीज़ों की हमेशा रक्षा करना, एक स्वास्थ्य और एक व्यवहार। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य और व्यवहार ठीक रहेगा तो जीवन में किसी भी परिस्थिति में आप आगे बढ़ सकते हैं और आप संकट का सामना कर सकते हैं। ये दोनों इतने महत्वपूर्ण तत्व हैं। So I remember my father saying that, and as I have always tried to keep that motto in my life. So that is such an important thing, I must say, and it is not about healing, it's not about healthcare, it's about productivity, it's about economic. There is a huge economic angle to it. What will a sick man do in his life, and what will a man with deteriorating health will do in his life for economy and country? So that's another aspect. The third word is innovation, and it is so important because the world is changing, and if we do not innovate, if we don't listen, and I think that's very much important from these kind of audience, these kind of conferences, that we meet people. अभी मैं दिल्ली में था तो आई मेट द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग श्री सुमन बेरी जी, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि सभी राज्यों का, नीति आयोग का ये भी एक कार्य है कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप राज्यों के नीति का भी एक संवाद कराए रखें। तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ एंड ग्रेसफुल टू एक्सेप्ट माई सजेशन, एंड ही डिड certain dialogues. We had in Dehradun the first one. हमने कहा I will have to walk the talk, so we did in Dehradun the first one, and in Pune and in Tripura. And in this dialogue, when we were having, he told me, what happened, Mr. Joshi, you gave me a suggestion, we got these three things done. Was there any benefit of these conferences? So कि लोग आए और चले गए या कुछ क्या लाभ हुआ उससे? मैंने कहा बहुत लाभ हुआ। पहली कॉन्फ्रेंस में लखनऊ के लोग आए, मेघालय से लोग आए, और अभी त्रिपुरा में मैं मिला, तो मैंने इतने अच्छे संबंध बनाए सबके साथ कि आज अगर मुझे किसी भी आवश्यकता पड़ती है, या बॉम्बे में कि जैसे अभी हमारी वेस्ट की समिट हुई, तो वी कुड कॉल पीपल फ्रॉम वेरियस स्टेट्स. So, and we often we send our policy documents to get their feedback. So it is not just about that conference. The innovation comes out of meeting and continuously building that bond, and it's so important. So I said that, as I said, these three things are very important. I very strongly believe that innovation is so important, and technology is the biggest answer to the Himalayan healthcare systems. And इसमें चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं. बाकी तो हेल्थ के डोमेन्स हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन है और आपके मेंटल हेल्थ है, एंड व्हाट शुड वी डू इन डायबिटीज़ एंड व्हाट शुड वी डू इन कैंसर एंड सो फोर्थ. बट फोर थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. One is healthcare technology. The technology has advanced so much and its cost has also become so economical that we must try to introduce more and more. That is one part. Second is PPP model, the public-private partnership model. Government does not have answers to all the problems in the society and for development. It will have to partner, it will have to bring collaboration, and it will have to change its own mindset. And it is upon the government to do that, actually, because सरकार बड़ी होती है, उसका दायित्व भी उतना बड़ा होता है. तो पीपीपी मॉडल को करना कि हम प्राइवेट पार्टनर्स को कैसे अपने साथ जोड़ें और उस तरह के अच्छे मॉडल्स बनाएं जो न सिर्फ अच्छे समय पर काम करें बल्कि डिफ़िकल्ट समय पर भी काम करें. मैंने कई ऐसे पीपीपी मॉडल्स देखे हैं जो अच्छे समय के लिए लिखे जाते हैं. सब अच्छा चल रहा है तो सब बढ़िया चल रहा है. जैसे ही द थिंग्स गो साउथ एज दे से, योर कॉस्ट पेशेंट्स कम डाउन और कॉस्ट गो अप, द मॉडल स्टार्ट फेलिंग एंड द प्राइवेट पार्टनर रन्स अवे. So we have to build robust PPP models looking at all these things. The third thing is digital and AI. It is so important that because we will never have enough people, we will never have enough doctors in the hills to address that. Even if they go there, they may not stay there for long because there is not enough social infrastructure in the hills. A doctor and his family will like to remain in a big city than small city. So I think that's extremely important. And the fourth very important aspect is preventive diagnostics. दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हमारे यहाँ है कि जब बीमार होते हैं तब हम जाते हैं.
हमको कभी भी हमारे पास अगर लोग बीमारी बढ़ेंगी, बीमारी का बढ़ना तय है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लाइफ स्ट्रेस बढ़ रहा है आदि, हमारे पास कभी भी इतने लोग नहीं होंगे कि हम इसको एड्रेस कर सकें. तो प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो एज आई सेड, 4 important aspects: healthcare technology, digital and AI, PPP models, and preventive healthcare. These are 4 very, very important aspects if we have to improve the healthcare systems, apart from, of course, working in the domains. And we are starting a major study right now in the healthcare system in Uttarakhand, because we very sincerely believe that it has to be looked very holistically. हम लोग कई बार कहते हैं कि हम इतने डॉक्टर भेज देंगे, हम इतने इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, हम वहाँ ये मशीन लगा देंगे, बट वी आर नॉट लुकिंग एट सिस्टम इन अ होलिस्टिक वे. You have to look at availability of people, you have to look at technology being used there, you have to look at the availability of consumables, medicines, IT systems, processes, outcomes, KPIs, monitoring, tracking, all these things together if we have to really look at the healthcare system. So therefore, I will not take much time. I think I've enough expressed my thoughts. The key themes today are so important today: strengthening public healthcare system, that we spoke about, disaster, emergency, trauma and systems. We are speaking to AIMS Rishikesh on what can we do regarding the trauma systems. And I must also compliment AIMS Rishikesh for very, very forward-looking ideas. Their director, I think she will be also coming, that's what I've been told. And the whole team is anyway here, of the senior team. They are very forward-looking. They want to look at, AI. They want to look at cancer, especially things like cancer, obesity, and trauma, and so on and so forth, which is there. So some of the things dialogue. Role of CSR, philanthropy, women's health and menstrual hygiene, advanced healthcare delivery, mental health in the Himalayas. This is a very important topic, and this is something we really want to take it forward. And we are anyway, the Setu Ayog is going to work with the Department of Higher Education कि हम colleges में mental health care को लेके एक drive चलाएं, identify करें कुछ counselors and fellowships, and you will be very happy to know that one of the leading groups in the country, in this, the Aditya Birla Group Trust and the Empower, and Mrs. Neerja Birla herself. I mean, I've been very privileged to work very closely with the Birla family, and she has agreed to support us extensively. She is to leave the country, so she could not come. But she's very passionate about mental health care, and she's going to certainly get involved. That's what she said. This is something which we'll take forward, and PPP in healthcare. So I won't take much time. Only thing just before leaving, I would like to say that this conference should not be just left upon to deliberations and talks, but as I said often, AIR model. What is the action we are going to talk about? What is the innovation we are going to think of, and also who is going to, and will you be able to contribute? Responsible कोई इसकी जो जिम्मेदारी भी ले सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ से आए. और गवर्नर साहब का हमको एक सजेशन भी था कि इस कॉन्फ्रेंस में जो भी डेलिब्रेशंस हों, जो एक्शंस हम इसमें सोचें, जो भी हो, उसको एक अच्छे से प्रिजर्व किया जाए, to be presented and structured so that whether there's a coffee table or something like that, so that it becomes something which we can inspire from and doesn't end with this conference today. So thank you so much. Thank you for very patiently listening to me. I wish all the participants of this conference a very happy and productive day today, and also many congratulations. And it's an auspicious day to start on the first day of Navratri. Namaskar. Jai Uttarakhand. Jai Bharat.